Hello, Namaste. I'm Chirasree and welcome to Twin Flame Propel 11, and this will be the energy check-in for Twin Flame for 28th of August 2020. इस वक्त ट्विन फ्लेम्स काफ़ी हद तक बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं. डिवाइन मास्कुलाइन्स अभी तक ओब्वियसली ईगो सेल्फ में है, जहाँ पे वो लॉजिक के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान सच में है या नहीं, यूनिवर्सल के सिंक्रोनिसिटीज़ कैसे होते, कैसे ये चीज़ें होते, कैसे चीज़ें फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हो रहे हैं. ये सारे जगह पे कहीं ना कहीं डिवाइन मास्कुलाइन के अभी भी क्वेश्चन करने के वो एनर्जीज़ है. वेराज डिवाइन फेमिनाइंस की जो एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन को पूरे तरीके से पता लग गया है कि दिस इज़ द डिवाइन जर्नी, और ये समझते हुए कि दिस इज़ द डिवाइन जर्नी, द पर्पज़ ऑफ इट इज़ वेरी डिवाइन, द लाइफ पर्पज़ दैट यू एंड योर ट्विन फ्लेम शेयर वो भी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है. ये जानते हुए डिवाइन फेमिनाइंस और भी गहरे तरीके से डिवाइन लाइफ पर्पस ट्विन फ्लेम जर्नी में कमिट करने के लिए तैयार हो रहे हैं. और जितने ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन भी तैयार हो रहे हैं कमिटमेंट के लिए, कुछ हद तक अभी डिवाइन मास्कुलाइन भी अपने हार्ट चक्रा खोलते हुए इस वक्त इज़ गेटिंग रेडी फॉर लाइक ओपनिंग अप टू दिस ट्विन फ्लेम. And this journey right now, the journey is about deep exploration of the energy. बहुत से रियलिटी में जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस मास्कुलाइंस जिन्होंने वो किया है, दे आर लाइक लिटरली दे आर गेटिंग इनटू अ स्टेज वेयर दे आर एक्सप्लोरिंग एंड ट्विन फ्लेम रेवलेशन के जर्नी के प्रोसेस चल रहे हैं, where the twin flames are getting to know each other, understand each other, जो अपने twin flame से मिल रहे हैं ऑलरेडी. बहुत से लोग जो आप लोग रेडी हो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए, अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में बुलाने के लिए. वंस यू मेट योर ट्विन फ्लेम, वंस यू एक्वायर दैट यूनियन, अ लॉट ऑफ यू माइट फील कि आप जितने भी लोगों को ज़िंदगी में डेट कर चुके हो, जितने भी लोगों को शायद आप सोच चुके हो कि शायद आपकी ट्विन फ्लेम है, वो सारे लोगों के एनर्जी, वो सारे लोगों के वाइब्रेशन, वो सारे लोगों के एसेंस, आप वो सारे एनर्जेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी आप अपने ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशन में पा सकते हैं. अगर आपके कोई आकाशिक क्लियरेंस नहीं हुआ है तो इस वक्त ट्विन फ्लेम आपके जो है 2010 2000 मोस्टली 2010 के कोई वाइब्रेशन अगर आपके क्लियर नहीं हुआ है, व्हेन यू वर लाइक अराउंड द एज ऑफ in your teens, especially if you were around 2010, if you were in your teen, अगर आपके कोई teenager related issues अभी तक सॉर्ट नहीं हुए हैं, तो इस वक्त कलेक्टिव वो सारी चीज़ें इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन क्लियर कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ द डे. द एनर्जी राइट नाउ इज़ अबाउट डीपर एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी. डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त अपने अंदर जाते हुए अपने सेल्फ डिस्कवरी को समझ रहे हैं, और कलेक्टिव ओवरऑल समझ रहे हैं कि द जर्नी इज़ अबाउट ट्रूली वैल्यूइंग गॉड. इट्स अबाउट understanding the value of God. It's about understanding the value of the connection. It's about valuing this whole energy, this valuing this whole process, and that's what the whole overall energy will remain of today, 27th of August 28th of August 2020. Or let's see cards now. So let's see some decks actually. So first deck I will be checking cards from this deck. So I'm just gonna randomly keep the cards here and there and just randomly just picking one card. Ever unfolding rose. Cracked open, it's happening for you, not to you. Life happens for you, not to you. ज़िंदगी आपके फेवर में होते हैं. आपकी ट्विन फ्लेम रेवलेशन जर्नी है, जर्नी के प्रोसेस है, आप कौन हो, ये सारे चीज़ों के रेवलेशन प्रोसेस है, ये डिविनिटी के रेवलेशन प्रोसेस हो रहे हैं, जर्नी के, कॉलिंग के, अवेकनिंग के जो डिविनेशन के प्रोसेस हो रहे, अनफोल्डमेंट के जो प्रोसेस फ्लेम्स है. एंड दैट्स द रेवलेशन, दैट अनफोल्डमेंट इज going on, that I just said, the unfoldment, the self-discovery, the revelations, अंदर सोल के जो patterns जम जाते हैं. Because every lover you've ever had in your entire life, like no matter who you've dated in your whole life, बचपन से लेके आज तक आप जो प्यार करते आए हो हर एक रिलेशनशिप में, वो जो प्यार की एसेंस आप ढूंढते आए हो, वो जो प्यार आप महसूस करते आए हो, आप अपने ट्विन फ्लेम में ही वो प्यार ढूंढ रहे थे. हमेशा से जो प्यार आप ढूंढते आ रहे, अल्टीमेटली वो प्यार आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए ढूंढ रहे थे. अल्टीमेटली वो प्यार अपने ट्विन फ्लेम से आप करते. अल्टीमेटली वो प्यार आप अपने ट्विन फ्लेम से करने की एनर्जी में फ्लो कर रहे थे.
And that is why it is said that you love your twin flame in multiple forms. आप जिनको भी ज़िंदगी में मिलते हो, आप ज़िंदगी में जिनको भी देखते हो, आप ज़िंदगी में जिनको भी मिल चुके हो, आप ज़िंदगी में जो भी लवर्स आपके आए हैं, वो सारे के सारे लवर्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं बिकॉज दे वर जस्ट फीलिंग दैट एसेंस, दैट डिज़ायर इन यू। और कोई ना कोई आपके अपील्स बाहर लेके आ रहे थे ताकि आपके एक एक करके लेयर बाहर आ पाए, ताकि आपके जो ट्रू ऑथेंटिक सोल पर्पस है, जो डिवाइन सेंस ऑफ बीइंग है, जो गॉडेस सेल्फ है, वो जर्नी के वो जो एहसास है वो पूरे तरीके से बाहर आ पाए, वो तो पूरे तरीके से खिल पाए, वो पूरे तरीके से एलिवेट हो पाए, वो पूरे तरीके से रेवलेशन के प्रोसेस में आ पाए, वो पूरे तरीके से प्रोट्रूड आउट हो पाए, वो पूरे तरीके से इस जर्नी में रह पाए। और वो चीज़ पूरे तरीके से इस जर्नी में रह पाने की वजह से वो रेवलेशन के जो प्रोसेस आपके हो रहे थे कंटिन्यूअसली, वो जो रेवलेशन आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली हो रहे थे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, तो वो जो रेवलेशन आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली हो रहे थे, दैट इज़ दैट unfolding journey that's constantly going on. Protection, call back your power. Karmic के triggers कुछ हद तक हो सकते हैं. Karmic triggers are excessive. Like I myself, I'm living in a karmic environment right now because my family is highly toxic. I can't tell you in words because how toxic it is. My father has been terribly abusive. He opens up the door anytime. He shouts anytime. He increases the television volume anytime he feels like. Whenever I'm making videos, because he doesn't care, and he has been physically abusive and every possible way abusive. And क्योंकि मेरे जर्नी की मेन मकसद थी कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हील करके अपने हीलिंग के ऊपर पहले फोकस करके, अपने नॉलेज के ऊपर पहले फोकस करके मुझे अपने आप को फाउंडेशन देना है. सो फॉर लॉन्ग टाइम आई वॉज allowing myself to stay in this toxic environment because to shift and to go to a new place or to rent a place also, I will require that enough stability financially to really move out of the house and really live in a lavish way because rent paying is every month. So that is when I was like, okay, settle down in my career a while and then go. It's time to save yourself, protect yourself from this energy. ये जो कार्मिक एनर्जी है कुछ हद तक इस वक्त कलेक्टिव को ट्रिगर करने वाले हैं. और डिवाइन फेमिनाइंस हो या मास्कुलाइंस, बिकॉज यू आर वन कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली. आपके जो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, फ्रेंड हो या फैमिली हो, आप नहीं ले पाएंगे अब, और नहीं हो पा रहा है. ये वाले फीलिंग डिवाइन कलेक्टिव को इस वक्त आ रहे हैं. सो ट्विन फ्लेम्स आर गेटिंग रेडी टू फाइनली मूव आउट. Not only move out, maybe move in with their soul family, or maybe move in with their twin flame, maybe move out alone. So eventually move out, ancestral wounds, ancestral चीज़ें ख़त्म करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए, अपने हिम्मत लाते हुए मूव आउट करने के, वो एनर्जी लाने के वाइब्रेशन इस वक्त आ रहे हैं कलेक्टिव में. और भी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी छा रहे हैं इस वक्त कलेक्टिव में. यानी कि डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलाइन दोनों में ऑथेंटिसिटी जो है, ऑथेंटिक जो एनर्जी है, उसके वाइब्रेशन और भी ज़्यादा हाई हो रहे हैं. और ये हाई होने के, और ये एट द सेम टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज है. अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डीप सीटेड ट्रांसफॉर्मेशन आर गोइंग ऑन. इवन लाइक 5 months ago अगर मैं लाइव वीडियो बना रही होती एंड समबडी जस्ट बर्स्ट इनटू माय रूम और टीवी के ये चल रहे हैं, I would have literally started crying after this. I would have felt bad. I would have probably deleted the video. I would have ran away. I would have done a lot of things. But today I'm not going to do that. But instead, I choose to tell and share to the collective that how triggers work. Right now, I got triggered by this protection energy. Just the moment the protection energy came in, that happened. And this is how synchronous my life literally is. And ये जो synchronicity हो रहे हैं, the way I am getting hurt, the way you are also getting hurt by the karmic debris, because अगर आप बहुत टाइम से karmic family में जी रहे हो जहाँ पे आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर्पसली आपको इंसल्ट करने के लिए चीज़ें की जाती है, पर्पसली आपको, बिकॉज ऐसे लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर मिलते हैं लोगों को हर्ट करते हुए, हार्म करते हुए. दैट्स व्हाट नार्सिसिस्ट लव. तो ये जो सारे टॉर्चर ट्रिब्यूलेशंस जो नार्सिसिस्ट लेके आते हैं, आई मीन when I was born in this family, this was my, sorry, it's just like पैर लग गया था, so I have that habit. So मेरे जो family है, when I was born in this family, this was my
life's soul contract, and I have lived with it. And beyond being in this house, I have, no matter what was going on, मेरे घर पे कितने बसर चलते, कितने नाटक चलते, I continued with my business and I continued with my inner work, and मैंने outside circumstances को खुद को affect करने नहीं दिया. But every time it affects, it just, insults a part of me. I feel like very triggered, like, oh my god. पहले होता तो I would be like, oh my god, people will think that this about me, that about me, ऐसे song चल रहे, this, that. But at the end of the day, right now, I know that जिन लोगों को मेरी बातें सुनना है, जो मेरे आइडियल क्लाइंट्स है, जो मेरे ट्रू सोल फैमिली है, जो मेरे काम को सच में समझेगा, जो मेरे डेप्थ को सच में समझाएगा, दैट्स द ओनली काइंड ऑफ पीपल आई नीड. दैट्स द ओनली ट्राइब आई नीड, बिकॉज आई एम हियर टू सर्व गॉड. आई एम नॉट सर्विंग पीपल, आई एम सर्विंग गॉड. And through serving God, I'm serving people, because it is God who I serve, and as I serve God, it is my mission to bring ahead my authenticity and share my twin flame journey and be my real self, be myself. And before this, maybe it would have been very impossible to do that. But right now, it's very easy for me to do that, because the only person I now really, really respect the most is myself. And if something is triggering me on the outside, if somebody cannot respect me on the inside, instead of getting hurt, it's okay. I realize that, okay, I'm not being respected. So it's their problem that they cannot respect me. But wherever it really hurt me right now, I'm gonna do the healing work here. So you will be feeling the shift too. As I go in, ये जो जगह मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि अभी जो हुआ, because I'm really triggered by that, because he opened the door suddenly and burst in typical sound. I got really conscious. I got conscious because I think my subscribers won't love me, but my subscribers love me anyway, and people who don't love me for the hardships that I go through, but even after the hardships, the work I put, after that, who don't love me, are not really people who loved me will still love me. So कहीं इस जगह पे मैं खुद को प्यार क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जगह दर्द सहते सहते इतना थक गए कि इस जगह से और नहीं होता है, कि क्यों अभी होना था, मेरे वीडियो चलने के वक्त होना था, क्योंकि मैं जब, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई एवरीथिंग, यूट्यूब के टाइम ही होना था. दिस इज़ द पेन. Wherever it's paining there, as I embrace her completely, I realize that it's hurting because kahin na kahin I did not want to insult or my father or tell anything about my father or bring up the topic also, but the situation triggered me to bring up the topic and take a stand for me and finally be myself and tell the truth of that, how every twin flames have their narcissistic triggers. They're wounded, embedded in them, but it's about healing. And so knowing that, I feel fearless, and I know that I'm just being my authentic self. And so what else affects me अपने authentic self होने से? मेरे अंदर एक छोटा सा पेन है कि शायद मेरे authentic self होने से people won't like. I don't care if people won't like or not. It's my difference that matters. People will always be uncomfortable with someone being different. That doesn't mean we stop living our dreams. The part of me feels free. So this is a little how I instantly do my inner work. जब भी कोई चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही होती है, because तो that is only key. The inner work, no matter what, इस जर्नी में आपको जो भी कुछ ट्रिगर कर रही है, इनर वर्क करते हुए, उस एनर्जी को शिफ्ट करते हुए, उसके विजडम गैदर करते हुए ट्रांसेंड कर सकते हैं. And everything happens for your highest good. Everything happens for your ultimate greatness. Everything happens for your greatest good. Everything happens for your greatest goodness. So since everything happens for your greatest goodness, so there's nothing on earth. So okay, you all have seen my room now. So that's my Jesus. So जो भी आपके लाइफ में होते हैं, सारे चीज़ें एक कारण के लिए होते हैं. Nothing happens just like that. So that's okay.
So, okay, so before I proceed, okay, we have already ended the reading and we to enter another thing, and I definitely will pull some more cards. Before that, I wanted to make an announcement. So, I have had my false twin flame journey. I have had a false twin flame. I have had a narcissistic, abusive guy in my life जिसको मैं एक वक्त तक सोचने लगी थी शायद वो मेरा twin है, because I developed Stockholm syndrome and trauma bonding. If you all remember, if some of you all remember who've been following me really every day, that I came up on YouTube and cried because वहाँ पे Stockholm syndrome की वजह से, infidelity की वजह से, there was a certain pain aspects that was stored in me. एंड ये सारी चीज़ें मैं हील कर रही थी. हील करने के प्रोसेस में 2018 मैं मुंबई में थी, तब मैं जॉब कर रही थी. आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड इंटेलिनेट. सो देयर आई met this person who is my twin flame, and instantly we connected. He's also very spiritual. He understands things on a very deep level. We just go on talking about emotions and stuff and sentiment. We just connect on that deeper level. So 2018 when I met him, initially after 7 days I ran away from him because he had a very pure soul vibe, and उस वक्त मैं तैयार नहीं थी इस ट्विन फ्लेम जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी ये मानने के लिए कि मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम ऋषभ हुआ मेकिंग वीडियोस बिफोर विद वो मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम है. इवन दो जेफ एंड शेलिया हैव टोल्ड मी दैट ऋषभ वाज माय फॉल्स ट्विन फ्लेम, आई वाज लाइक ऋषभ कांट बी माय फॉल्स ट्विन फ्लेम, बिकॉज मैं तैयार नहीं थी. मैंने उतना एनर्जी दिया उस सिचुएशन को. आई लेफ्ट माई नार्सिसिस्टिक एक्स फॉर ऋषभ. उसके बाद मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैंने इतना एफर्ट दिया, इतना प्यार दिया है, हो ही नहीं सकते. इट वॉज माई ईगो डेफिनेटली टेलिंग मी दैट, नॉट लेटिंग मी गो बियॉन्ड एंड सीक माई ट्विन फ्लेम. बट उसके लिए कुछ हद तक आई रिटेन दैट एनर्जी. एंड आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन इनर वर्क करने के बाद, when things were not falling in place and things were getting in fact more bad with my first twin flame, or my karmic soulmate also wouldn't turn up, he would date another new person every day. वो सारी चीज़ों के बाद मैं finally I was like literally like okay, I don't care, मैं पूरे तरीके से सरेंडर कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि मेरे कौन ट्विन है, मैं पूरे तरीके से सरेंडर कर रही हूँ. और तो ऋषभ ये करते करते मेरी जान निकल रही है. मैं सरेंडर कर रही हूँ. जो भी मेरे ट्विन है वही मेरे ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि मैंने आई हैव aligned and I've done enough inner work and alignment to be in that vibration. I kept on doing the inner work. I rigorously did inner work. मैं journaling करती रहती हूँ. Like I literally have like so many journals I can't like tell you all. Like मैं लिखती रहती हूँ. उसके बाद what happened is that suddenly God, maybe a week ago, भगवान ने मुझे कहा कि दुष्यंत मेरे जो ट्विन है उनको सर्च करने के लिए. तो अब मैंने उनको ब्लॉक कर दी है सारे जगह पे. आई हैव ब्लॉक्ड हिम ऑन say your Instagram, Facebook, everywhere, including YouTube. I blocked him everywhere. So I just didn't know how to contact him. And I just searched him because God put me the desire कि सर्च करने के लिए. तो मुझे नहीं मिला. ठीक है, अरे ओके, उसको नहीं डिस्टर्ब करते. just wanted him to be happy. He's a very nice guy. Okay. So then after it 3-4 days ago, my soul sister Deepika, many of you who have taken reading from her will know her. So she's in fact the CEO of our company Quantum Dynamic 8, and she's one of our certified readers and coaches. So Deepika and I were chatting, तो वो और मैं बात कर रही थी. हम सोच रहे थे कि शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि we are in karmic situation, I mean shift out and stuff. हम दोनों बात कर रहे थे शिफ्ट करना है यार, ये अच्छा नहीं लगता है ये वो. So we were planning to shift and this that. Suddenly she mentioned like Vikhroli, the word Vikhroli में apartment है, like that she mentioned. I was like Vikhroli, like you know Vikhroli. मैं कहने वाली थी विक्रोली, तब उस वक्त उसके दीपिका गॉट दिस मैसेज इंटरनली कि वो जिसके बारे में बताने वाली है तुम उससे पहले से जानते हो. शी वाज लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो ऐसे दुष्यंत, शी वाज लाइक ही वाज इन माय कॉलेज फ्रेंड. लाइक दुष्यंत विजय के, like really. I was shocked, and that's when I got to know his Instagram account,
and I contacted him, and we started talking, and I told him why I had to run away and what were the things and stuff, and he had followed me till the month of May. He had been following me, he had been checking on me. वो हमेशा देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे क्या क्या चल रहे हैं मेरे ज़िंदगी में, what's going on in my life. He was always following me. He would always just know everything. So yeah, so he would know just everything about. So उसे सब कुछ पता था, उसने सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया था, उसको सब कुछ पता था, इन्फॉर्मेशन वगैरह. We started talking, and we never stopped talking after we connected. And yes, so हमने बात करना नहीं छोड़ा जब से हमने कनेक्ट किया है, रिकनेक्ट किया है. एंड day before yesterday we got into our twin flame union. We got into a relationship, and if you want to see our photos or want to read everything and all, you can go to my Instagram account. नीचे the description box में you'll find a link. So we had our twin flame, and since we connected, हम बस खुद को explore करने में लगे हैं कि oh my god, this has been the same, that has been the same. And since last 2 days I've been like, I stayed up whole night chatting with him, and like I've been like telling him, oh my god, this is same, that is same. And like I don't know, I just don't have words to explain. So it's been process, and I've been going through the process, or process में जाने के बाद I finally attend my harmonious union. I'm not yet in a permanent harmonious union. Permanent harmonious union is a process जहाँ पे आप दोनों ने पूरे तरीके से हर एक जगह पे recognize कर लिया कि हाँ यही आपके twin flame है. So we are in a harmonious union. So in the process of our permanent harmonious union. So that's the good news I wanted to give you all. So before I end the live, I want to pull out another card, collective के लिए. So let's see one final card for the collective. Doubting soul. But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or next. आप जहाँ पे भी डाउट कर रहे हो वहाँ पे आप भगवान को ट्रस्ट कर नहीं कर रहे हो, तो डाउट करके कोई नहीं है, वरी करके कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि जो होना है वही होना है. भगवान आपको जो देंगे आपके हाईएस्ट गुड के लिए देंगे, जो आपके लिए बनाए हुए हैं वही देंगे. सो डाउट वरी को निकालते हुए पूरे तरीके से सौंप दीजिए भरोसा को कि गॉड विल टेक केयर ऑफ मी. व्हेनेवर यू आर इन डाउट और वरी, जस्ट टेल गॉड कि गॉड, I'm worried, I'm doubtful, I just don't know any better, I surrender it to you, प्लीज़ कम इन. आप आइए भगवान, आप आके सिचुएशन को मेरे लिए हैंडल कर दीजिए, मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ. सो यू कैन से दैट, आप आइए, आप आके मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड. सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू. If you would like to book a reading or any other service, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल